पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमलों की एक बार फिर मज़म्मत करते हुए इसे ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार सलामती काउंसिल से खिताब में मुतालबा किया है कि सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसराइली जाहरियत को रोके और जाहरे को उसके इक़दामात पर जवाबदेह बनाए और हालात काबू से बाहर होने से कबल ईरान इसराइल पायदार जंगबंदी करवाए। The Council must fulfill its duty and affirm the following. First, categorical rejection and condemnation of Israel's attacks on the Islamic Republic of Iran since 13th of June and all actions that contravene international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Second, play its due role to end the hostilities and promote de-escalation for achieving a comprehensive ceasefire before the situation spirals out of control and threatens the peace and stability of the entire region. Third, clear denunciation of the targeting of IAEA safeguarded nuclear facilities against the provisions of international law and the UN Charter as reflected in the UN Security Council resolutions, IAEA resolutions and international humanitarian law, including the Geneva Conventions. The Security Council must implement its own resolution 487. Fourth, call for dialogue and diplomacy to promote a peaceful and lasting resolution of the crisis.